बेसिक प्रोसेस स्किल्स, बुनियादी प्रोसेस स्किल्स कौन से हैं? बेसिक साइंस प्रोसेस स्किल्स आर एज फॉलोज। साइंस के जो बुनियादी प्रोसेस स्किल्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला जो है ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, इन्फेरेंस एंड प्रिडिक्शन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन इज द बेसिक साइंस प्रोसेस स्किल। ऑब्जर्वेशन जो है ये बुनियादी साइंस का प्रोसेस स्किल है। इन ऑब्जर्वेशन ए लर्नर सी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, एक लर्नर जो है वो ऑब्जेक्ट्स देखता है एंड इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंस। ऑब्जेक्ट्स देखता है और वाक़यात देखता है विद द हेल्प ऑफ फाइव सेंस, अपने पांचों हिस्सों से। Observational skills provide basis for other science process skills. The observations can be in qualitative and quantitative terms depending upon the purpose of observations. For example, the observations that the tree is very tall or is a qualitative observation, whereas 10-meter tall and 2-meter dwarf और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। दोनों ऑब्जर्वेशंस में फ़र्क बताया गया, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद मेजरिंग है। मेजरिंग द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ऑब्जर्वेबल थिंग्स एंड इवेंट्स इज एन इम्पोर्टेंट स्किल as it is necessary to describe dimensions of an object or event. Each dimension has certain units. हर डायमेंशन के एक खास यूनिट्स होते हैं, जैसा कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन मीटर्स। किसी भी शय की जो लेंथ है वो मीटर में उसकी पैमाइश की जाती है। वॉल्यूम इज मेजर्ड इन लीटर्स। वॉल्यूम जो है वो लीटर में मेजर किया जाता है। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। मास जो है उस किलोग्राम में मेजर होता है, पैमाइश होती है। हीट इज मेजर्ड इन कैलोरीज। हीट्स जो है वो कैलोरीज में मेजर होती है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन। टेम्परेचर जो है वो केल्विन में मेजर्ड होता है। सम रिलायबल टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर द सर्टेन डायमेंशंस। लेंथ इज मेजर्ड विद फुट। लेंथ जो है वो फुट में मेजर की जाती है। मीटर रॉड और इंच टेप। मीटर रॉड के थ्रू या फिर इंच टेप के साथ। वॉल्यूम इज मेजर्ड विद ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बीकर, पिपेट और फ्लास्क। वॉल्यूम जो है वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर, बीकर, पिपेट या फिर फ्लास्क के थ्रू मेजर किया जाता है। मास इज मेजर्ड विद इलेक्ट्रिकल बैलेंस। मास जो है वो इलेक्ट्रिकल बैलेंस से मेजर किया जाता है। फिजिकल बैलेंस से भी हो सकता है और स्प्रिंग बैलेंस। हीट एंड टेम्परेचर आर मेजर्ड विद calorimeter and thermometers. हीट और टेम्परेचर जो हैं उनकी पैमाइश जो है वो कैलोरीमीटर और थर्मामीटर में की जाती है। टू डिस्क्राइब द डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट वी यूज standard and non-standard measures and estimates. Some example of standard measures include using a foot ruler or measuring tape to measure length, measuring volumes of liquid with graduated devices, object or event, measuring temperature with thermometer, measuring mass of liquid, solids or gases. Classifying. Things and events are classified on basis of same characteristics for easily and systematic study. This skill is abruptly used in science. You might have learned about the classification from class 4 to upper classes. Matter has been classified into 4 groups. मादा जो है उसको 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया, solids, liquid, gases and plasma. In the same way, biologists have classified living things into animals and plants. इसी तरह biologists ने क्या काम किया है कि उन्होंने जानदारों को 2 ग्रुप्स बनाए हैं, जानवरों के और पौधों के।
Inferring. Inferring is the explanation of what we observe. Inference में क्या होता है कि explanation होती है, वजाहत होती है कि हमने क्या चीज़ observe की है. Making an inference means drawing a conclusion about specific event on the basis of our observations and the fact or data that we collect. Statement of observation may include cause and effect relationships. For example, we observe rats dropping in the room and infer that the line is somewhere near that place. Or if we observe that leaves of plants are eaten, we infer that insects might have eaten them. In science, inferences guide the investigator in his investigations. Communicating. Communication is sharing information or knowledge. Communication में knowledge जो है वो share होता है. Results of an experiment, findings, ideas or opinions with the other in verbal, written or graphic form. For example, we may describe the change in height of a plant over a specified time in writing or through a graph. Writing the report of an experiment in words, presenting the result of an experiment in table, graph and chart from, and verbally describing something are few examples of communication. Communication is an important skill both in daily life as well as in science. Communication जो है ये बहुत ही अहम महारत है डेली लाइफ के अंदर भी, रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी और साइंस के अंदर भी. इन डेली लाइफ we communicate verbally, in writing and also through pictures, or as such communication is often termed in pictographs and पिक्टोग्राम्स. कम्युनिकेशन हम अपनी डेली लाइफ में कैसे करते हैं, ज़बानी कर सकते हैं, राइटिंग लिख के भी कर सकते हैं या फिर पिक्चर्स के थ्रू भी करते हैं. और पिक्चर्स के थ्रू कौन सी हैं, पिक्टोग्राफ और पिक्टोग्राम्स. Egyptians used pictogram as means of communication. मिस्री जो हैं वो पिक्टोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए. As we infer from pictographs found in pyramids of ancient Egypt, कि हमने पिक्टोग्राफ्स जो हैं वो दरियाफ्त किए थे कहाँ से, मिस्र के कदीम पिरामिड्स में से. Predicting. Every day on radio and television, the newscaster gives us information. हर रोज़ रेडियो पे और टेलीविज़न पे न्यूज़कास्टर खबरें पढ़ने वाले हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द नेक्स्ट डे वेदर फॉरकास्ट. अगले आने वाले दिनों की वेदर फॉरकास्ट देते हैं, मौसम की सूरत हाल का बताते हैं. विच इज़ बेस्ड ऑन डेटा, जो जिसकी बुनियाद डेटा पे होती है, मवाद पे होती है. सच एज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी बुनियाद मॉइस्चर पे होती है जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर होता है. और दूसरा एयर प्रेशर. दिस इज प्रिडिक्शन, ये प्रिडिक्शन है. प्रिडिक्शन मीन्स stating the outcomes of a future event based on a pattern of evidence. प्रिडिक्शन में क्या होता है कि हमने आउटकम्स बनाने होते हैं, बयान करने होते हैं आपके फ्यूचर इवेंट्स के बेस्ड ऑन ए पैटर्न एविडेंस. फॉर एग्जांपल, इन एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर ऑब्जर्व्ड द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट ओवर ए पीरियड ऑफ 2 weeks. एक एक्सपेरिमेंट है मिसाल के तौर पे. द रिसर्चर ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट. रिसर्चर जो है वो एक पौधे की ग्रोथ जो है उसका मुशाहिदा करता है और ए पीरियड ऑफ 2 weeks, 2 हफ्तों के दौरान.
and makes a graph of it और उसका ग्राफ बनाता है based on a graph. इस ग्राफ के बुनियाद पर its growth during the previous 2 weeks, he predicts about its growth during the next week. The six basic skills can be put in a logical order of increasing difficulty. These basic skills are used in an integrated manner when scientists design and carry out experiments. For example, observation about the size can be made through measuring the objects. Similarly, to infer, we need to first observe. The science process skills form the foundations for the scientific methods. These are important individually as well as when they are integrated together.